Hello students, no accountancy. Uh, it is a new subject there for the class 11 student, and for class 12 the level get increased, but the basic of accountancy is what? It is general. So before starting with the partnership and other chapters of 12th, I would like you people to just refresh the debit and credit rules of your journal. Okay, so we know the debit and credit rules. There are two debit and credit rules, right? There are two weekend divisions. There are two methods there. One is your modern method, another is your right traditional method. Traditional methods you people have already, I suppose, done. Some of the students might have done the modern rule as well. So under the traditional method, we divide the accounts into three different categories, that is real account, personal account, and nominal account. Okay, so I am starting here with the modern rule. Modern rule divides the accounts into assets, right, then liability and capital. So I am putting both under one head. Why? Because liability and capital both are one side of the balance sheet, asset on the other side. So liability and capital both follow the same rule. And third is your expenses and expenses and losses, and then gains and incomes. Okay. So now what is asset? Asset, just whatever thing measure the worth. Okay, the thing which measure the worth of an individual or an organization, or which helps in production, is what called to be asset. What is liability and capital? The difference is, means this is under modern rule, under British rule. What is liability and capital is? Liability is what a business owes to outsiders, okay, or cider or businessman. Like expenses, losses, income and gains, on the daily routine basis, whatever things are being spended by the business to continue the working, or whatever things they receive during the course of business, they are called their expenses and incomes. Okay. So now asset and liabilities. Generally assets are there. There can be current assets or as well as fixed assets. But the rule for debit and credit remains the same for the assets. Okay. Increase in asset or purchase of asset. Okay. Or incoming of asset. It is being increased. Okay. So what we supposed to do? We have to debit it. Why we have to debit it? I believe I'll just you people know what is the format of the journal. So make me a simple journal here and let you know. Under the journal, we post the journal entries. Okay, entries are posted here. These are whatever we post here in this. This is what called to be journal entry, and this is what called to be journal. It is not journal entry because some of the students, they make mistake while posting the entries. They write it journal entries. When the question asks
write the journal entries. So they write here journal entries itself. So it is only journal. It is not journal entry. So we have different columns here, like your date column, particular column, LF column, debit and credit column. Let's suppose we have an entry here, cash account debited to bank account. Okay, so the cash account we have debited, there's an upper side, and bank account that it is credited on the lower side. So this one is the upper side of the entry and this is the lower side of the entry. If we'll speak in the for the layman, right? The layman who doesn't know what is journal, what is accounting. So to that person we can say दो एंट्रीज हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है. ऊपर वाली एंट्री डेबिट है और नीचे वाली एंट्री क्या है? क्रेडिट है. ठीक है. सो जो ऊपर है एंट्री वो क्या होती है? हमेशा डेबिट एंट्री होती है और नीचे की तरफ जो एंट्री होती है वो हमेशा क्रेडिट एंट्री होती है. तो चलिए उसी तरह से हम समझते हैं कि जब एसेट आता है बिजनेस में तो क्या रहता है आपका बिजनेसमैन के लिए? ही इज इन अप कंडीशन. ठीक है. ऊपर आता है वो. इट इज वेरी सिंपल थिंग कि जब एसेट आ रहा है तो क्या होगा? आपकी पोजीशन हाई होगी, आपकी पोजीशन ऊपर होगी और एसेट जाएगा तो पोजीशन नीचे होगी. अ वेरी सिंपल डायलॉग, right? Those who are watching movies and those who are fan of Amitabh Bachchan, so they must be knowing a very famous dialogue of him. आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, right? तुम्हारे पास क्या है? So he was just talking about his assets and asking about the assets of the other person. तो अपने assets की बात कर रहा है. Assets क्या है? जो चीज पर्सन के पास थी, उसके पास थी, जो उसकी वर्थ थी. गाड़ी, बंगला, right? Bank balance, cash, jewelry for a simple human being, but for a business, building, property, vehicles, जो भी उसके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, उसका प्लांट, उसकी मशीनरी, whatever investment the business has made, ओके, उधार जो उन्होंने बेचा है सामान अपने डेटर्स को, वो भी उसका क्या है? एसेट ही है. सो दीज आर कॉल्ड टू बी एसेट्स. जब उसके एसेट बनते हैं, ठीक है, वो कौन सी पोजीशन पे जाता है? अप पोजीशन पे. तो जब एसेट्स बन रहे हैं अप पोजीशन यानी कि डेबिट, और जब एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, ओके, और वी कैन से सेल इन एसेट, सेल ऑफ एसेट्स और आउटगोइंग ऑफ एसेट. क्या होगा? नीचे आ गया. नीचे क्या है? क्रेडिट. ठीक है. बिजनेस में वो ऊपर आ रहा है, एसेट आ रहा है तो ऊपर, जा रहा है तो नीचे. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल फंडा. एसेट आएगा ऊपर डेबिट में, एसेट जाएगा नीचे क्रेडिट में. तो ऊपर वाली एंट्री डेबिट एंट्री और नीचे जो टू के साथ एंट्री लिखते हैं वो कौन सी होती है? क्रेडिट एंट्री होती है. एसेट आया ऊपर, एसेट गया नीचे. एसेट खरीदा ऊपर, एसेट बेचा नीचे. ठीक है. एसेट बढ़ा ऊपर, एसेट घटा नीचे. क्लियर? चलिए नाउ विल जस्ट मूव टू द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी और कैपिटल. अब लायबिलिटी है क्या है? लोन है, राइट? डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, राइट? आपने फ्रेंड से लोन लिया, अपने रिलेटिव से लोन लिया, अपने बैंक से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, कंपनी ने जो है डिबेंचर्स बेच के लोन लिया, राइट? उधारी ली, अपने सामान उधार लिया, वो क्या है? सब उसकी लायबिलिटी है क्योंकि इसको देना है. जनरली इसे क्या बोलते हैं आप? देनदारी. ठीक है. जो देनदारियां हैं, तो देनदारी क्या है? उसकी बाहर वालों को भी है और बिजनेसमैन को भी. उसकी कैपिटल भी वापस करनी है बिजनेस को. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी है क्योंकि उसे जो है उसके ओनर को भी वापस करना है. ये ओनर्स लायबिलिटी है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है. तो अब लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या कंडीशन होती है किसी की? वो ऊपर जाता है कि नीचे? वेरी सिंपल. जब लायबिलिटी बढ़ती है तो भार बढ़ा, और जब भार बढ़ा तो क्या हुआ? नीचे की तरफ आ गया. ठीक है. आपको जब हम लेते हैं किसी चीज पे, आप तराजू पे भार तो लेंगे तो क्या होगा? जो चीज भारी है वो नीचे आ जाएगी. तो लायबिलिटी भी एक भार है. जब बोझ बढ़ेगा तो नीचे आएगा. बिजनेस पर जब लायबिलिटी बढ़ी तो क्या हुआ? इंक्रीज इन लायबिलिटी या बोरोइंग ऑफ लोन. ठीक है.
या हम कह सकते हैं रेजिंग कैपिटल, क्या हुआ आपका, क्योंकि बढ़ रहा है तो ये होगा क्रेडिट, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड। पर लायबिलिटी कम हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटी और पेमेंट ऑफ लोन्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा, और दिस इज this one, reduction in capital, reduction in capital, क्योंकि कम हो गया तो क्या हुआ, the business feels lighter, then it will come up, तो क्या हो जाएगा, this is will be debited। liability बढ़ी नीचे आ गई, ठीक है, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ी नीचे आ गई, क्रेडिट। कैपिटल घटी ऊपर आ गई, डेबिट, ठीक है। लोन पेमेंट कर दिया आपने, नीचे आपका जो है लोन पेमेंट हो गया, देन यू कम अप, राइट। अब क्या हो रहा है यहां पर, आपका नीचे क्या होगा कि लायबिलिटी जाने से आपका जो है बोझ कम हुआ, आप ऊपर आ जाते हो, लायबिलिटी लेने से आपका बोझ बढ़ा, आप नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो वेरी कॉमन थिंग, वेरी सिंपल वे, एक हम लेमैन के हिसाब से ही सोचे कि जब वो एसेट लेता है तो ऊपर आ जाता है, एसेट बेचता है तो वो नीचे आ जाता है, लायबिलिटी लेता है तो नीचे आ जाता है, और लायबिलिटी पे करता है तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, दैट इज योर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, राइट। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस भी क्या है कंपनी के लिए, जब वो एक्सपेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, जब वो एक्सपेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी हम देखें तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। और इनकम्स होती है उसके पास, बिजनेस की इनकम्स, बिजनेस की लायबिलिटी किसकी तरफ बनी, उसके ओनर की तरफ, ठीक है। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस किसके बेसिस पे हुए, आपके ओनर की तरफ। इनकम बिजनेस को हुई तो वो किसको देना, उसको, ओनर को। अभी दिया नहीं है, अभी बिजनेस में ही है, तो क्या है, ओनर के लिए उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी जब उसकी बढ़ी तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। सो आई फील लाइक चिल्ड्रन, डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ दिस modern rule, assets, liability, expense, incomes or losses, gains must be clear to the people. All of you must be knowing the contents of balance sheet, what are the assets, what are the liability, and if any of the problem is there in the contents of the assets and liability, you will learn here in this year. So the things will be clear to you, and to learn this debit and credit rule in the way of assets and liability become easier for you to post the entries, because your more than 50% of the accountancy is journal entries. So I believe I have made myself clear. So continue learning and revise these things, so we can continue in the next lecture about chapter partnership. Thank you, children.